Okay. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. So see, yesterday we have discussed the Ziegler-Nicholas open loop method. Okay. In the Ziegler-Nicholas method, open loop method, we have discussed the process reaction curve. Based on the first order process delay, you can see we have already defined the FOPTD, first order plus time delay system, and for the system e to the power minus theta s k upon 1 plus tau s. So this was your transfer function, and for this you have observed some response in the form of the S type of curve, and we already have discussed this where the first this concavity is going to increase, and after a point this concavity is going nature is changed, that is into the convexity. This point is known as point of inflection. Okay, point of inflection, and we trying to draw the tangent. We are trying to draw the tangent for the same, and this the x where the this inflection point, the tangent will intersect at the x-axis, and the extension of this tangent at the steady state when we sketch this value here, and corresponding to that value in the time axis, or you can say the x-axis, is the total time period, that is the t. Okay, और ये जो आपका मिला, that is the time delay, propagation delay or transportation delay. This is represented by the theta, and then the remaining portion is your tau, that is the time constant of the problem, that is the e to the power minus theta s upon 1 plus tau s k. So this is the tau you can calculate from this. Theta you have already calculated from this, because you have t is equals to theta plus tau from the response. Okay, and you can calculate y is equals to km. Since you know that y is equals to km, what is m? M is the amplitude of the input whatever you have applied. Okay, so you can find out the k by y divided by m, right? So from this equation, you know, you can find out the, you can evaluate the value of k, you can theta, and the value tau. Based on this value, you can finally determine the tuned value of the kp, ki, and kd based on the table proposed by the Ziegler-Nicholas, Cohen-Kuhn or whatever AMIGO. ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं है तो आप don't leave that. Okay, but these two are in your syllabus. So what do you have to do? So for the proportional controller, for the purpose of KC setting, you can calculate by this formula, tau divided by k theta, and the PI for the proportional and integral setting you can find by this formula and this. So there is no need to remember this table. This table will be provided to you for the final exam. Okay, for the calculation purpose, if the required, if the question required. Secondly, how this equation have been proposed. So the answer was, anybody can tell me what is the answer? How this formula can have been formulated or calculated? Anyone? सर ये तो बताया नहीं था, मतलब कि आपने बोला था
हाँ क्या कि बोला? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। यस, यही तो मैं बोल, अभी भी यही बोलूंगा मैं, अभी भी यही बोलूंगा. Since this technique has been proposed by the Ziegler and Nicholas, and these two men are, this total theory was based on their experimentation. Okay, and no explanation has been found in the literature how these equations have been developed. But the most probable answer, most suitable answer, based on the data, based on the past history of the plant, they may develop the correlation or regression based equation, and these are that, ये हो सकता है, ठीक है, but I am not confirm how this equation has been found. Okay, so tables provided होगा और आपको इससे करना होगा. Clear है? Okay. Now come to the next point. We already have seen the 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 problem of what is the problem of in this Cohen open loop method, Galen open loop method. There is a very difficult to find out the exact point of inflection. So for avoiding the complexity, the Sundarsan and Krishnaswamy in 1978 have proposed, so that they have proposed to do T1 and T2. Just calculate the T1 and T2 from this figure 35.10. This we already discussed these things. 35.3%, 95.3% of the corresponding response. Just calculate that time period, okay, and put in the equation, okay, then you can find out the theta and tau value. Now next is the Ziegler-Nicholas closed loop method, okay, and it is one of the important method. Okay, so how it works? तो इसके लिए मैंने बोला था कि आप लोग कुछ पढ़ के आएंगे, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था, यस और नो? तो ठीक है, अभी हम लोग आगे जैसे से बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे. ध्यान समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में ना आए आप पूछ लेना मुझसे दोबारा से, बीच में टोक लेना. 100% इट विल कम इन टू एग्जाम, ठीक है, 1 or 2 क्वेश्चन 100% इट विल कम अपीयर इन एग्जाम, ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा तैयार रहिएगा. करना क्या है, हाउ द जिलर निकोलस वर्क्स एंड क्लोज लूप मेथड में जेडन मेथड से आप कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे. इसके लिए पहले आपको समझना है, एक स्क्रीन से मैं आपको समझाता हूँ. कल जैसे मैंने आपको समझाया था, लेट से वी हैव अ वन कंट्रोलर, दैट इज द PID कंट्रोलर KC. लेट से वी हैव अ KI, or you can say tau I, whatever 1 upon tau I, that is 1 upon S. And let's say we have the KD, and this is the S. Okay, so you can say that this is the nothing but the PID controller, parallel form of PID controller, if I am not wrong. Okay, and this is the set point, and here we are going to, this is the PID controller. Okay, this is the basically a controller, nothing else. And let's say this is the process. Okay, so अब आपको करना है क्या, ये क्लोज लूप है, ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ से आपका YT आ गया, ठीक है, दिस इज द RT, this let's say this is the one RT, this is the error, and whatever the signal generated here PT. Okay, so your target is to compute from the Ziegler-Nicholas closed loop method is, क्या find out करेंगे हम, please, what we are going to find out? सर KP What we KI want to, KD Constants. constants, which वही constants, है ना. KC KI KD. हाँ, KC KI. आप इसको कांस्टेंट मत बोलो, दिस, आप इसको कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट और डेरिवेटिव कांस्टेंट, अब इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, जो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए उस समय कहते हैं. ट्यूनिंग पैरामीटर. Now, yes, it is either the control, it is the
यहाँ पर ये सर्चिंग पैरामीटर्स है ना, इसको पैरामीटर्स कहा जाए, ठीक है। और मोस्ट कहा जाए कि ट्यून हम लोग ट्यून करना है इस वैल्यू को, इस पैरामीटर्स को, केसी के आई के डी कंट्रोलर पैरामीटर्स को, ठीक है। ओके, so now we have to find the optimum value of kc ki and kd, so that these are the gain, system gain, okay, these are the controller gain, है ना। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, जेडन मेथड, हमने जेडन क्लोज लूप मेथड यूज किया। तो पहला मेथड क्या था, ओपन लूप का, जिसमें प्रोसेस रिएक्शन कर्व से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रोसेस रिएक्शन कर्व से नहीं फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करें, सी इनिशियली आपको क्या करना है, फर्स्ट you have to wait for the process should be, let's say you have started some process, okay, and after some time, after an interval of time, this process is going to settle, ठीक है। so when the process is going to settle, or you can say achieve the steady state value, or you can say the normal level of operation, then remove the any other modes. Other modes means other controllers modes, except the proportional controller. आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, सिस्टम स्टार्ट होते समय आपको, इट इज वंस अगेन इट इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये आपको समझना है। दिस इज इन द लैब, दिस इज इन आवर प्रोसेस लैब, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट by your hand also. What you have to do, once again I'm saying you, first you have to start the system, or let's say the system is already started, so wait for the steady state achievement. आपको उस समय तक वेट करना है जब तक सिस्टम स्टेडी स्टेट पे नहीं आ जाता। once the system achieved the steady state, okay, then from the PID controller, remove the IND. Remove the IND. Now tell me how the IND will be removed, please. How the IND will be removed, because you know the PID controller, in the PID controller all these are already worked. ये सारा एक साथ है ना, या सुनो, तो सारा एक साथ है, कैसे हटाएंगे। सो टाउ आईडी आई की को इस वैल्यू तरह इनफाइनाइट कर, और हाँ बताओ। सो टाउ आई की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देनी है, इनफाइनाइट, और टाउ इनफाइनाइट मींस लार्जर वैल्यू, है ना, लार्जर वैल्यू, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द टाउ डी, व्हाट अबाउट द टाउ डी, कौन बोल रहा था। जीरो कर सर देंगे टाउ सर। डी स्मॉलर वैल्यू सर, जीरो। यस जीरो टाइप। यस, आप इसको जीरो नहीं कहिए, इसको स्मॉलर कहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू, आइडियली जीरो, you can say, yes, ideally you can say zero, or you can say that this is the infinite, okay, right. So this is the, okay, now see, तो ये आपका, आपने क्या किया, आपने पहले सिस्टम को स्टेडी स्टेट पे आने दिया, इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर को हटा दिया, अब केवल रह गया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द प्रोपोर्शनलिटी जो वेरिएबल है आपका केसी, ओके, इस वैल्यू को नाउ जस्ट टू इंक्रीज, एंड यू नो फ्रॉम द टेबल the typical value, the typical range of kc is varying from 0 to 100. We already have seen in one example, I think, yes or no, हमने किया है ना ये। यस सर। रेंज वाला शायद एक स्लाइड ही था। मैं यही बता रहा हूँ ना। See, okay, so the 0.1 to 100, the typical range is from 0.1 to 100, right? When you are going to varying the kc value, if you are talking the proportional mode or proportional control in terms of proportional band, then it will vary from 1 to 1000%, right? So we are talking here in the terms of the kc, so we are going to vary the range from 0 to 0.1 to 100, right? Okay, so 0.1 to 100
में हम अब कर रहे हैं आगे। So now we are going to vary the value of Kc, the value of Kc from 0.1 to 100. तो कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट एट 0.1 and see the response. Then we increases 10, let's say. ठीक है, sorry 1. Then see the response. Then 10, then see response. समझ में आ रहा है ना? उस तरीके से आप 20 इस तरीके से रिस्पॉन्स आप चेंज करते जाइए. Just see the response what you got. लेट से 0.1 और 1 के बीच में आपको कब तक ये ऐसा काम करना है? अनटिल अनलेस आपके पास एक सस्टेन्ड वैल्यू ना आ जाए. सस्टेन्ड वैल्यू, सस्टेन्ड ऑसिलेशन ना आ जाए, कुछ इस तरीके का ऑसिलेशन. अनटिल अनलेस यू डू नॉट गेट देन up to that point just to increase the value the value of Kc. Now I'm just reading what is written here. After the process reaches at a steady state at the normal level of the operation, remove the integral and derivative modes of the controller, right? Leaving only the proportional control. We have to leave only the proportional control. On some PID controller, this requires that integral time tau be set the maximum value. How the PID controller, how the PID controller is to be formed in the proportional control has to be transformed the PID proportional control only by setting the integral tau I by the maximum value, higher value, and the derivative time to the minimum value, right? It's okay. Next, select a value of proportional control gain Kc, disturb the system. सबसे पहले आपने क्या किया? Kc की वैल्यू को लिया. Now you have disturbed the system and observe the transient response. Okay, आपने response check किया. If the response decays, then select higher value. Okay, if your response is going to decay, then select higher value of the Kc and again observe the response of the system. कब तक करेंगे? Continue increasing the gain in the small steps until the response first exhibits a sustained oscillation. Sustained oscillation. ठीक है, कब तक करना होगा? Until unless you didn't get the sustained oscillation from the system, right? Once you got the sustained oscillation, observe that Kc value. Observe that first Kc value. Let's say 0.1 और 1 में भी आप कह रहे हैं, तो just to take the in between them also, क्या पता उसके बीच में भी आ जाए. तो आपको चेक करना होगा मिनिमम कौन सी वैल्यू है Kc का जहां पर आपको सस्टेन ऑसिलेशन मिलने लगा. रिमेंबर, तो यू हैव फर्स्ट टू चेक द सस्टेन ऑसिलेशन जहां पर आया. नोट दैट Kc वैल्यू and then the value of the gain and the period. Okay, let's say you have calculated such type of oscillation, so you can find out the pu बोले तो this is the pu is nothing but the time ultimate period, or you can say the time period, ultimate period. This is the ultimate period, this is the pu, this is the pu, right? And corresponding to this oscillation, this system, you have to find the gain kcu. आपको 3 काम करना है, याद रखिए. इस Kc के corresponding you have to calculate the value of Kcu and you have to calculate the value of Pu. So you have calculated the Pu. It is very simple from the response. MATLAB में जैसे ही आप value Kc की value आप change करके, I will show you one example on the MATLAB, or if you want I will show you a video, right? So when you just put it the value, जैसे आपको observe होगा ये, you can observe this Pu. You can note this value Pu with the help of the MATLAB, the time axis. यहाँ से आप इसको find out कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. The problem is to calculate the value of gain corresponding to this response. Okay. Now how this gain could be calculated? This is the problem. तो अब इसको देखते हैं कैसे calculate करेंगे. अगर ये आपने calculate कर लिया, once you have calculated the Kcu and Pu by any means, your problem becomes very easier. Okay, then second round, just see the the table,
found by the Ziegler-Nicholas from the closed loop. Okay, cycle. It is also known as the closed loop method. Is also known as the Ziegler-Nicholas continuous cycling method. Okay, so just to have calculated the Ku, multiply by this 0.5, you can calculate the value of Kc. Okay, if you want to calculate the value of Kc and tau I for the PI controller, then just multiply 0.45 into the Ku, and tau I Pu divided by 1.2 will give the tau I value. Okay, and similar for this PID value, right? It is clear? इतना clear है? Please say yes or no. ये 0.5 वाला सर कैसे आया? मतलब 0.5 0.45 वाला? ये again ये आपका बताया, this is the Ziegler, it is the table formed by the Ziegler-Nicholas. अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करके Yes. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये again this is the experimental table. This table will be provided to you. This is the experimental table, and this is the formula given by the Ziegler-Nicholas based on their experimental value. ओके सर। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि आपको केवल Ku की वैल्यू और Pu की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और होगा कैसे? सस्टेन्ड ऑसिलेशन जहां पर आएगा वहां पर। सस्टेन्ड ऑसिलेशन कैसे आएगा अभी बताता हूं आपको। इतना क्लियर होगा कि नहीं भाई बताओ? Ku और Pu की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, नथिंग एल्स, और you have to put this value into this formula and you can calculate the value of Kc, tau and tau d. So ultimate problem of the Ziegler-Nicholas may be asked in exam. आपको अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? Ku और Pu फाइंड करना, बाकी तो कुछ है नहीं, टेबल में पुट कर देना है। और जब इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए, लेट से यू हैव टेकन द प्रॉब्लम s+1 s+2 s+3, लेट से दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, एंड इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो जैसी वैल्यू आप पुट करोगे आप देखोगे कि आपका सिस्टम इसके बाद कुछ इस तरीके का आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, वो ट्यून कर देगा, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस के लिए वाइडली अप्लीकेबल है, एंड देयरफॉर द पीपल्स ऑफ द इंडस्ट्री पीपल्स आर यूजिंग टुडे, आज भी हम लोग यूज करते हैं इसको, इसमें सुना, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द our target is to calculate the value of Ku and Pu at any how and any cost, right? अब समझिए Ku है क्या? What is the Ku? Ku and Pu has been calculated at the sustained oscillation, okay, and this Ku is defined the ultimate gain. This Ku is the ultimate gain, and Ku is equals to 1 upon A. और A है क्या? What is A? A is the overall amplitude ratio determined at the crossover frequency omega c. याद है what is the phase crossover frequency? आप लोग गेन मार्जिन कैसे निकालते थे? हैव यू रिमेंबर्ड गेन मार्जिन? प्लीज, हाउ द गेन मार्जिन कैलकुलेटेड? सर पहले ओमेगा पीसी निकालते थे जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड को इक्वल्स टू 1 करके ओमेगा पी से निकालते थे। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? सर मैग्नीट्यूड को 1 कर देते हैं। नहीं सर, 180 हाँ जी, एंगल को -180 डिग्री कर देते हैं सर। एंगल को -180 डिग्री करते हैं, यस, we have to put the minus one. We will see one example, -180 डिग्री, ओके। उसके बाद क्या करते हैं? तो ओमेगा पीसी, जो ओमेगा आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वो आपका कहलाएगा ओमेगा पीसी, राइट? जिनको Yes, नहीं sir. पता है उसके लिए बता रहा हूं। कितने लोगों को नहीं पता? प्लीज जस्ट टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट द ओमेगा पीसी, हाउ द ओमेगा पीसी हैव बीन कैलकुलेटेड? प्लीज, सबको आता है? सर हम रूट लोकस पढ़ के आ गए थे तो वो रिवाइज नहीं कर पाया। मैंने तो कल कहा था कि पढ़ना है।
मतलब हम रूट लोकस के आगे 2-3 वो लेक्चर देखते रह गए। बाकी आता है सर। हाँ जी, कौन बोल रहा है? देखिए कैसे निकलेगा। सर सलीम। हाँ बोलो। सर जीएस में ट्रांसफर फंक्शन में सर रियल पार्ट को वो इमेजिनरी पार्ट को सर जीरो कर देंगे, वहां से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे उसमें? सर ओमेगा पीसी सर। नो नो, सी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली okay, see, you have to calculate the value of ku, okay, and the ku is defined by 1 by a. 1 by a is the a should be calculated at the phase course of frequency. Gain margin, you know what is the gain margin? Gain margin nothing but the 1 by a और 20 log a mod a में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स से GSHS is defined 1 upon s plus 1, right? So we have one example, don't worry. With the example we will see. Okay, let's see, this is the example. Consider the plant with the transfer function gain GS is equals to 1 upon s plus 1 whole cube, right? Now let Ku and Pu be the ultimate gain and the ultimate period corresponding to the frequency responding to the based on Gilder-Nicholas method. Okay, so now find the value of Ku and Pu. This is the question, right? So 1 upon s plus 1 cube, 1 upon s plus 1 whole cube is equals to, you can write this in the terms of the g j omega. When you put the s as equals to j omega, you can put as the j omega plus 1 whole cube, or you can 3 times you can write. You can write the 3 times j omega plus 1, j omega plus 1, j omega plus 1, right? Okay, and whatever the angle, just to calculate the angle of g j omega and put as equals to minus 180 degree. Okay, at the minus 180 degree, whatever the omega will be calculated, this omega is called the omega pc, phase course of frequency. So see, what is the angle for this? 1 upon j omega plus 1 के लिए क्या एंगल होगा? प्लीज बताइए। माइनस ऑफ tan inverse omega, yes or no? For this 1 upon j omega plus 1, for the omega j omega plus 1, what is the angle? Minus tan inverse omega plus 1. Okay, if the square is there, then क्या होगा? Please, minus 1 more tan inverse omega plus 1 by is there. Let's say it's a triple, so minus tan inverse omega divided by 1 is there. So how many times is there? 3 times, so it becomes minus 3 tan inverse omega by 1, or we have said the angle should be equal to the minus 180 degree, so we have put it equal to 1 minus 180 degree. Calculated the omega as equals to √3. It is one of the very simplest problem I am demonstrating. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो just you ask. In the exam, such a simple problem will not be asked. Okay. Especially in the online exam. So if you have any problem, you can ask in order to calculate this value, right? Okay. So this omega to omega is equals to becomes omega is equals to √3. This omega is known as omega pc. Nothing else. This is the omega pc. Okay. Now see. So what is this omega has been calculated? Omega is equals to √3. So how this, now we have to calculate the gain, right? Gj omega, mod of gj omega. अब देखिए आपको क्या दिखाएगा? आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है a 1 by a. अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है a से मिल जाएगा आपको ku, ठीक है? और a क्या है? तो मैंने आपको बताया कि a फाइंड आउट होगा कहां पर? इस फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी पे। फेज क्रॉस कैलकुलेट हो गया। नाउ कैलकुलेट द गेन of the system. So what is the gain?
the 1 upon s plus 1, अगर ये होता तो क्या होता 1 upon j omega plus 1, right? Or it is, since it is q, so it becomes also q. Now we have to calculate the gain of this. So क्या बन जाएगा gain? 1 upon रूट अंडर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और 3 टाइम्स है तो उसको 3 टाइम्स में लिख दिया, राइट? 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूबिक वैल्यू। एनी डाउट? सो अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू पुट द ओमेगा पीसी वैल्यू, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द गेन at phase crossover frequency. You have to calculate the gain at phase crossover frequency, and this is the phase crossover frequency. Just to put this omega is equal to root 3, you have calculated 1 by 8. This is the A. This one is the A, 1 by 8. So what is the KU? KU nothing but the 1 by 8. So it is becomes 8. KU becomes 8. Any doubt? Okay. Now you have to calculate the value of PU also. So what is the PU? PU I already tell, this is the time period. Okay, this is the period of the oscillation. Okay, PU is just defined as the period of sustained cycling that will occur into the proportional control within KUS. Okay, so you can visualize from this picture also. Okay, so this is the PU. This is the PU, right? So PU may be calculated with the 2 pi by omega CO. So you have already calculated the omega C. You have already calculated the omega. Just put the value tu or pu is equals to 2 pi by omega. Okay, and just to put the omega value, so it becomes 2 pi by root 3. So you have calculated the value of pu, you have calculated the value of ku. Just put in the table, this table. Okay, ku you have calculated, pu you have calculated. You can find out the setting, kc, tau a, tau d, you can calculate. Now you are free to ask any doubt if you have. जिगलर निकोलस अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आधा से ज्यादा काम खत्म। सर जो पीआईडी कंट्रोलर होता है उसमें से हम लोग आई और डी बाद में हटा कर देते हैं, मतलब आई की वैल्यू के आई की वैल्यू बढ़ा कर देते हैं और एडी की वैल्यू स्मॉल वैल्यू क्यों रखते हैं उसकी? ये सस्टेन ऐसा करते हैं कि पहला ऑसिलेशन जो आ रहा है केसी का, हम लोग क्या करते हैं पीआईडी के में सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की सेटिंग को ठीक करते हैं। जब हमने हिट ट्रायल मेथड किया होगा, आपको याद होगा, तो हिट ट्रायल मेथड में भी हमने यही काम किया था। पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की सेटिंग को ही हमने ठीक किया था, याद है? उसके बाद इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर को हमने चेंज किया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के थ्रू हम चाहते हैं सारे वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वो वैल्यू जहां पर केवल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर काम कर रहा हो, जहां पर सस्टेन ऑसिलेशन दे रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम उस वैल्यू को चाहते हैं। सिंपल। फिर तो सर वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गया सर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पे है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही वहां पे है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल। वो कंट्रोल नहीं कर रहा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। वो कंट्रोलर आपको क्या दे रहा है? एक सस्टेन ऑसिलेशन दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात, आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप? आगे क्या चाहते हैं? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो, लेकिन आप आगे चाहते हैं कि आप चाहते हैं पीआईडी कंट्रोलर को डिजाइन करना। या सुनो, आप समझे नहीं बात? आपको थोड़ा और मैं समझ। एक मिनट वेट, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, आपने पहले पीआईडी कंट्रोलर में केवल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर हमने तो केवल यही वैल्यू तो लिया। यू आर राइट। Yes, we have neglected this value for some while, but our ultimate goal is to calculate or design the PID controller. Okay, and for the PID controller, we have to tune the value of Kc, Ki, Kd. So if this Kc, the value, the sustained, the Kc at whatever the value of the Kc will give you the sustained oscillation. This is not the controlled, your controlled action of the system. ये controlled value तो नहीं है ना,
this is the sustain. आप चाहते what do you want from the system? You want from the system of such type of response, either this type of response, this type of response. Okay, so KC की वैल्यू का केवल वैल्यू इंपॉर्टेंस ये है जो आप KCU फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, और PU फाइंड आउट कर रहे हैं जिस वैल्यू पर ओमेगा PC वैल्यू पर, उसका इंपॉर्टेंट केवल यहां से सस्टेन ऑसिलेशन। ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कंट्रोल नहीं कर रहा, किसी भी एंगल से कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये केवल सस्टेन ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नो सर, हो गया। ठीक। एनी अदर? एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, सृष्टि समझ में आ गया? सृष्टि, सृष्टि इज हियर? वेरी गुड सृष्टि, Yes, sir, I am. आ गया? Yes, sir. Good. Okay. Then, if you understand, then just to calculate the with the help of the Ziegler-Nicholas method, try to find out the value of the which type of control is this one, please. What is the nature of this controller? PI KI. KI कौन सा कंट्रोलर है? PI सर। PI controller is this one. Okay. So this is a PI controller, act on the one process, one upon its first order system. However, the process contains also a transportation delay of theta e minus 1.02. So e to the power e to minus 1.02 s represented the delay, and this is the system transfer function process, you can say, and this is the PI controller. Now you have to find out the value of the PI setting. PI setting means if you want to apply only the PI controller in this system for controlling the system, so you have to calculate the value of Kc and tau. Kc and tau you have to calculate, right, with the help of the Ziegler-Nicholas value. So how you will calculate? How will you calculate? The formula is again same. E to the power minus 1.02 s upon s plus 1, right? So 1 upon s plus 1, you can represent j omega plus 1, and it is the e to the power minus 1.02 j omega. Okay, so for the 1 upon 1 plus j omega, you can write simply write minus tan inverse omega divided by 1. Okay, whatever the equal to the minus 180 degree for calculating the omega PC value. First target is this one. और e to the power minus 1.02 s, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिन लोगों ने पढ़ा है दिस इज, तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन से, तो 180 डिग्री पाई, ठीक है, और माइनस 1.02 s इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा जे ओमेगा, एस एच टू जे ओमेगा है, सो माइनस 1.202 ओमेगा into 180 by pi. Okay, by this value, so this is not the, you can see this is not the simple algebraic equation, this is the transcendental equation. This is the transcendental equation. How the such type of equation has been solved? Anybody can tell me? Is it the simple equation? This equation involves trigonometric and this is the algebraic. So how can you solve? Let's say if I'm say x minus sin x, x minus sin x is equals to, let's say, 5. Is it very easy to solve this equation? नो सर, न्यूमेरिकल मेथड लगा सकते हैं वैसे, मतलब कोई इंटरप्शन वगैरह। Yes, उससे or solve the कर method. Yes. सकते हैं, So आप यहाँ पर heat या and फिर ओमेगा। yes, you have either you have applied the numerical method or the heat and trial method, right? So ठीक है, उसकी वैल्यू से आप 180 divided by 5 you can calculate the radian to degree, or we have already said
है ना, वन इसको आपने कैलकुलेट कर लिया सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड, ओके, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा सी। अब वैल्यू को पुट करेंगे पहले, है ना, और कोई मेथड है नहीं इसको सॉल्व करने का, ओनली दिस मेथड इज द हीट एंड ट्रायल और आइदर द न्यूमेरिकल मेथड। सो फर्स्ट ओमेगा की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 देखा, और इफ यू गॉट द माइनस 180 डिग्री then you going towards the right answer, otherwise you have to change the value, okay. So at the 2 radian per second you can see the crossover frequency will match, okay. So at this crossover frequency now you have to calculate again, what you have to calculate, the value of gain A, or how the A is calculated, you know, g j omega is equals to whatever the e to the power the magnitude of this value 1 minus 1.0.2 s upon s plus 1, इसका magnitude आप calculate कर लीजिए। तो this is j omega plus 1, so you can write this one, and what is the magnitude of this, this is the magnitude of 1, so you can calculate this, ठीक है। a आ गया, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए किससे, k 1 a आ गया आपका a, तो 1 upon a will provide the kcu, okay, and the sorry kcu, okay, multiply this setting by, for the PI controller by 0.45 will provide the kc value, and for the tau I just divided the pu by 1.2, okay. So you can calculate, you can see here the pu value, okay, and you can calculate the kc value. Any doubt? Any question? No? So I'm stopping here.